Yes, Assalamu alaikum, dear students. I hope everyone is able to hear me. So today we are going to begin solving the Cambridge past paper, uh, and this is from the year 2024. This is from the year 2024, February, March, and in February, March there is always only a single variant present, right? So generally in the February, March paper, it is bit of difficulty level is a bit high from the normal papers. But let's see how much different and difficult this paper is going to be. But uh, in May, June, and October, November, there is a definite level of difficulty as well. तो पेपर का टेक्सचर ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट 30% वेरी सिंपल, नेक्स्ट 40% इट्स मीडियोकर एंड लास्ट 20 to 30% इज प्रीटी हार्ड. सो लेट्स सी व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस पेपर और इसको हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में फिनिश करने की. बट वन थिंग मोर, we will in this specific session, because we are just practicing these papers prior to our mock exams, and waves part is still under study, so we will be avoiding the waves question for the time being, right, students? So let's begin with this paper. So in each sort of MCQ paper, this is actually an MCQ paper. In each sort of MCQ paper, you would be given such instructions as shown in the screen. तो इसको एक दफा go through कर लीजिएगा. ये 40 marks का आपका exam paper होता है. तो इसका भी आपको idea होना चाहिए. And each question is carrying uh, one single mark. So it's a 40 mark paper with 40 questions. Next जो important चीज है, each of the paper one is given with a data sheet. So data sheet में what is provided to you, these respective values are provided to you, which are generally usable in your calculations. But this Avogadro constant won't be used in AS. Molar gas constant will not be used. Boltzmann constant will not be used. Permittivity will not be used. Planck's constant and Stephen Boltzmann constant, these values are not going to be used for the AS paper, and likewise the value of G is also not going to be used. So you must be knowing about these facts. And only these formulas are provided to you for the paper. And this includes the two of the equations of motion, like third and fourth equation of motion, hydrostatic pressure formula, upthrust formula, Doppler's effect formula, I is equals to NAQV formula, adding resistors in series and parallel. That's it. No other formula will be provided to you. So you have learned an ample amount of formulas throughout in your AS course. So you must be having all those formulas memorized, noted, or present in your mind when you'll be sitting in the exam set. Plus, I have shared the detailed formula sheet with you people, so you must also be preparing and learning from that sheet as well. और वो sheet almost पूरे syllabus के formulas को involve करती है. So now let's begin without much ado. Let's begin with the questions. So question number one is related to the physical quantity and base units. So we are pretty aware. Question says that which of the quantity is having its base unit in SI system. So in short, it is asking about what? It is asking about SI base unit. So we know SI base unit is not same as SI unit. So if we are going to express any of the unit in terms of base unit, so we have only 7 base units. So वो 7 base units हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास current का unit होता है ampere, mass is measured in kg, time is measured in seconds, temperature is measured in kelvins, amount of substance is in mole, and intensity, light intensity is measured in candela. So probably कोई भी आपका unit, if it is expressed among from these units, it will be called as SI base unit. So let's see which of the quantity is SI base unit. So we know the quantity of so the quantity which is having, let's say, current. तो करंट का हमारे पास SI यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है.
और एसआई बेस यूनिट भी क्या होता है, एम्पेयर होता है। बट अगर मैं देखूं फोर्स का, मेरे पास एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बट एसआई बेस यूनिट ऑफ फोर्स इज नॉट न्यूटन, राइट? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट एसआई बेस यूनिट। सो एसआई बेस यूनिट के लिहाज से करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। तो mass का grams is also not an SI unit and temperature is का SI unit होता है Kelvin. So it is also not the option. So correct answer for question number one is going to be A. Question number two, there is a car of mass 850 kg. So this car is having a mass of 850 kilogram. Plus it is traveling along forward with a forward force of 1200 Newton, and diagram shows the two horizontal forces. One of the forces 1600 in the backward way. वो कहता है कि what is the magnitude of the acceleration? You have to find out acceleration. So this question is actually an application of Newton's second law of motion. So we have practiced such questions beforehand as well in our classroom. So we know what's the formula we are going to use for this. F is equals to ma. So F is what force? F is actually a रिजल्टेंट फोर्स। एफ हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स होती है। और रिजल्टेंट हमें पता है कैसे हम फाइंड करते हैं, जब दो ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 1600, लार्जर फोर्स को माइनस करेंगे स्मॉलर फोर्स से, 1600 माइनस ऑफ 1200 which will be equals to what is the mass, mass is 850, and what is the acceleration, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आपने निकालनी है, उसको सब्जेक्ट बना लें। सो दिस विल बिकम्स व्हाट, 400 डिवाइडेड बाय 850। So can anyone tell me what will be the value of the acceleration? Probably it will be equals to 0.47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक ही वैल्यू है ऐसी जो वन से नीचे जा रही है। इज इट सो? Yes, sir. ओके, एवरीवन इज विद मी? G, sir. Okay, so let's move onwards to the next question. Question number three says, an object of mass m is suspended by a spring from a fixed point. So this is a spring. Spring अगर जहाँ पे भी होता है उसका कोई spring constant भी definitely होगा. The object is set into the vertical oscillation of the period t. वो कहता है which equation is homogeneous. तो homogeneous equation कौन सी होती है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है. Which of the equation is going to be called as homogeneous if लेफ्ट हैंड साइड, यूं लिखना चाहिए, इफ एस आई बेस यूनिट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द एस आई बेस units of right hand side of the equation. So then the equation will be called as what? Equation will be called as homogeneous. पहले चैप्टर की बात है, मैंने आपको पढ़ाई भी है। तो अगर हम इसको वन बाय वन क्रॉस वेरीफाई करें या चेक करें तो वो होमोजेनिटी का पता चल जाएगा। तो वैसे भी क्योंकि जब स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा होता है उसकी इक्वेशन होती ही ये है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है, दो इट इज फार बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अ सिलेबस, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने ये पढ़ी हुई है तो इस वजह से मुझे आइडिया है। बाकी सारी इक्वेशंस जो हैं वो सारी फॉल्स बनती हैं, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये होमोजेनस है या नहीं। तो इफ आई सी द लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी इट इज नॉट टेम्परेचर, इट इज टाइम पीरियड। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, इट इज सेकेंड्स, राइट? अब मैं पहले राइट हैंड साइड की अगर बात करूं, if I talk about the right hand side, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई बेस यूनिट क्या होगा? सो आई नो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ हुक्स लॉ एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। तो मैं के का स्प्रिंग के का बेस यूनिट निकाल सकता हूँ विच इज फोर्स ओवर एक्सटेंशन, एंड आई नो व्हाट इज द एसआई बेस यूनिट ऑफ फोर्स, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर whole divided by extension, and extension is also a length, so it will becomes what, मीटर। सो मीटर एंड मीटर कैंसल्स आउट, तो के का मेरे पास यूनिट क्या बन जाएगा, के जी पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द
SI बेस यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मैं इसको मेन इक्वेशन में डालता हूँ। तो मेरे पास मेन इक्वेशन क्या है, 2 पाई को बेशक छोड़ दें, कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता। व्हाट इज द यूनिट ऑफ M ओवर K? तो मास मेरे पास आ जाएगा kg, और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या आ जाएगा, kg s⁻²। this kg cuts down, and when this s moves upward, so it will becomes what, s square. So under root and 2 cancels out, और हमारे राइट हैंड साइड का भी यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड्स. So is the unit on right hand side and is the unit on left hand side same? Yes, it is same. So my correct answer will be D. The correct answer in this case is going to be D. Is this understandable, people? Yes, sir. Okay, moving to the next question. Question number 4. Question number 4 says there is an object of a fixed mass which is initially at rest at point P. So एक mass है, एक point P के ऊपर वो rest पे पड़ा हुआ है. The object then moves away from point P with uniform acceleration. तो object move करना शुरू हो गया, but उसकी acceleration कैसी है, constant है. वो कहता है which statement describes the resultant force acting on the object? तो बताओ, does the resultant force increases if it is moving with a constant acceleration? अगर acceleration constant होगी तो आपकी क्या resultant force increase कर रही होगी? No. अगर रिजल्टेंट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट, बिकॉज वी नो एफ इज इक्वल्स टू एम ए. बट अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं है, तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो नहीं होगी. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट इज कांस्टेंट बट इट इज नॉट जीरो. और कोई मुझे बता सकता है व्हेन इज द फोर्स जीरो? व्हेन इज द फोर्स जीरो? फोर्स जीरो तब होती है या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या बॉडी मूव कर रही होगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. और जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो. तो यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट while सॉल्विंग सच बेसिक क्वेश्चंस. इज इट फाइन? Yes, sir. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज it is constant, but it is not zero. Okay, now next, let's come up to the projectile question. It's a basic question though. So what does this projectile question says? A projectile is launched at an angle of 25 degree to the horizontal with a horizontal component of velocity 13 meter per second. So what does it says? It says कि ये मेरे पास let's say एक projectile है जिसको launch किया गया, कितने एंगल पे लॉन्च किया गया? It has been launched at an angle of 25 डिग्री. वो कहता है कि उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, डेफिनेटली देयर विल बी सम वेलोसिटी v. व्हेन देयर विल बी सम वेलोसिटी v, तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल एक टू डायमेंशनल मोशन है. सो इट्स वेलोसिटी विल बी हैविंग वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेट्स से इट इज vh, and it will be having one vertical component, let's say which is called as vv. Question says if the horizontal component of velocity is 13, let's say this value is 13 meter per second. So question says what will be the value of vv, right? तो अगर मैं इसको बहुत ही बेसिक वे में देखूं, तो क्या मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा? अगर ये मेरी वेलोसिटी v है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो vh है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो मेरे पास vv को शो कर रहा है, तो व्हाट दिस एंगल इज एक्चुअली 25 डिग्री, राइट? vh मुझे पता है कितना है, 13 मीटर पर सेकेंड. और मुझे फाइंड क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट. अब इसमें मेरे पास v हाइपोटेन्यूस वाली वैल्यू नहीं है. अगर वो होती तो मैं सिंपल आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाता, v इज इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर प्लस वी वर्टिकल स्क्वायर. सो आई वुड हैव गॉट द आंसर. लेकिन ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन है, एंड आई एम नॉट हैविंग v एंड आई एम नॉट हैविंग vv. तो अब मैं क्या कर सकता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज करता हूं. आई नीड द वर्टिकल कंपोनेंट,
परपेंडिकुलर वाला पार्ट चाहिए, बेस है और एंगल भी है. So can I use tangent theta for this? Tan theta is equals to perpendicular over base, like vertical component over horizontal component. So if I need the vertical component, this will be equals to what? VH tan of theta. And this will becomes what? VH किसके equal है? 13 tan of 25 degrees. Yes, can anyone help me out in solving this calculation? What will be the vertical component? 13 tan of 25. Hurry up. Sir, it's 6.1. Yes, so it is appearing as 6.1. So my correct answer in this regard will be what? It will be 6.1 meter per second, right? Next question है question number 6. Question number 6 says a ball is released from rest at position X at time t of 0. At 1 second, it bounces inelastically from a horizontal surface and rebounds, reaching the top of its first bounce at 1.5 सेकेंड. तो कह रहे कि एक बॉल है, उसको रिलीज किया गया, और जैसे रिलीज किया गया उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई. जैसे उसने बाउंस किया तो हमारे पास टिप आया, और उसने वापस रीबाउंड किया तो इट बिगिंस टू मूव अप, बट इट इज रीबाउंडिंग inelastically, so it will not be having the similar height as before. क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन x एट 1.5. तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द, हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती कहां से है? एरिया अंडर द ग्राफ. सो एरिया ए, पहले आप एरिया ए फाइंड करेंगे, फिर आप ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, एरिया बी. यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एरिया ए एंड एरिया बी. और आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एरिया ए माइनस एरिया बी. सो एरिया ए और एरिया बी को माइनस करेंगे, यू विल गेट द आंसर. सो व्हाट दिस विल बी इक्वल्स टू, व्हाट इज एरिया ए इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस कितना है? 1. और हाइट कितनी है? 10. माइनस व्हाट इज एरिया बी? हाफ, बेस कितनी है? 1.0.5. ठीक है, दिस इज द बेस 0.5. और हाइट कितना है? अगेन इट विल बी 5. Height is how much? Again it will be 5. So yes, can anyone solve this calculation for me? How much this value is going to appear? So आप लोगों के आंसर के मुताबिक someone is telling me it is appearing at 3.75. So you may cross verify it as well whether it is 3.75 or not. G, is this understandable? Yes, good. Okay, moving onwards to the next part, question number 7. It says, what is the definition of acceleration? So how to define acceleration? So acceleration will be equals to what? Acceleration is called as rate of change of velocity. तो आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं change in velocity per unit time. So correct answer in this regard will be A. Right? So definition of acceleration is change in velocity per unit time. Never ever use a word of speed in defining the acceleration. और acceleration को define करने के लिए ये न्यूटन का second law भी use मत कीजिएगा. Okay, moving onwards to the next concept, it is pretty important और ये मैंने concept आपको पहले बताया हुआ भी है. Question कहता है two balls P and Q. So there are two balls P and Q and both are having equal mass. Their masses are same. This is having, let's say, a mass m, and this is also having a mass m. They move along a straight line directly towards each other as shown. Ball P has a velocity of 1.3 at to the right, and ball Q has a velocity of 0.5 to the left.
So this is how they both of them are having the velocity. P and Q collide with each other. The ball P and ball Q is going to have a collision, and collision is perfectly elastic, and total momentum is also conserved. Ji bacho, what is the concept I have taught you regarding this? When two bodies of equal mass collide elastically, they exchange their velocities. I taught you one rule. What was that rule? Two bodies, two bodies of equal mass. This is very important. Two bodies of equal mass collide elastically. When they collide elastically, they exchange their velocities. वो अपनी velocities क्या कर लेते हैं? Exchange कर लेते हैं. They exchange their velocities. इसका क्या मतलब हुआ कि P और Q जब इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद द वेलोसिटी ऑफ P विल बी द वेलोसिटी ऑफ Q, और Q की जो वेलोसिटी होगी वो P वाले की पहली वाली वेलोसिटी होगी. तो एज पर दिस, आफ्टर कोलिजन, वो यही पूछ रहा है कि आफ्टर कोलिजन इनकी मोशन कैसी होगी. तो P की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, इट विल बिकम 0.5 मीटर पर सेकेंड, और Q की becomes 1.3 meter per second. So as per this, what is the correct option we will be having? It will be D, 0.5 meter per second to the left, 1.3 to the right. Is it understandable? We studied this concept. We studied this concept in the case of momentum. You can just see my notes shared with you. उसमें मैंने ये बात पढ़ाई हुई है आपको. Two of the bodies which are colliding elastically having same mass, they exchange their velocities. उनकी velocity, एक की velocity दूसरे की बन जाती है, दूसरे की velocity पहले की बन जाती है. Is this fine? Shall I move on? Okay, move up to the next question. Question number 9. A basketball player hits a ball vertically downwards with a speed of 2.4 meter per second from a height of 0.9 meters. So let's say there is a basketball and it is going to hit the ground. Let's say this is a ground, right? This is a ground, and this basketball is going to move down. So, what is the initial speed with which it is moving? It is moving with 2.4 meter per second. It says the distance of the ball with the ground. This much distance is equals to 0.9 meter. What this distance is going to be? 0.9 meter. Question says, as this ball just approaches the ground, what will be its final velocity? And as it is saying that air resistance is negligible, so your acceleration will be constant, which will be equals to 9.81. So yes, how are we going to solve this scenario? We will be using equation of motion. And what equation of motion is suitable for finding out the final velocity? We will be using an equation 2as is equals to v square minus of u square. So what it will become? 2. It is falling down, so acceleration will be how much? 9.81. How much is the total distance? 0.9. We need to find out the final velocity. Let it be v square. What's the initial velocity? It is 2.4 whole square. So we will be solving this whole relation in a way that v square will be equals to 2 into 9.81 into 0.9 plus of 2.4 square. This moves to the other side. So it becomes plus, right? And after that, we are going to take its under root. So can anyone tell me what will be the value of v over here?
Yes. Can anyone tell me the value of the speed of the final speed of the ball? Yes, please hurry up. कोई मुझे बताएगा क्या मेरे पास फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल आएगी? Is it 23? No, it will be appearing as 4.8. I guess it will be appearing as 4.8. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 4.8 मीटर पर सेकेंड। आपने इसका अंडर रूट भी लेना है ना बाद में, पूरी वैल्यू का अंडर रूट भी लेना है। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? लेकिन जब ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो आपने दोबारा सबने रिकनेक्ट करना है इमीडिएटली। ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बॉल फॉल्स थ्रू अ लिक्विड एट कांस्टेंट स्पीड। एक लिक्विड के अंदर बॉल जो है वो फॉल कर रही है। इट इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस। एंड अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट बॉल पे कैसे लगती है? ऊपर की तरफ, इसको मैं यू से शो कर देता हूं। अ ड्रैग फोर्स, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है तो एक वेट लग रहा होगा, और क्योंकि ये नीचे को जा रही है तो एक इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी लग रही होगी, इसको मैं डी से शो कर देता हूँ। ठीक है, वो कहता है द लिक्विड हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। The density of the liquid is constant in which this ball is moving down. Statement says which statement is correct. So question says the drag force increasing with increasing depth. So C, drag force उस वक्त increase करती है if speed increases. This happens when speed increases. But here in the statement it is stating that speed is constant. So this option is going to be incorrect. Next it says the drag Okay. force is equals to the sum of upthrust and weight. This is also not possible because when any body is moving with constant speed, net force is zero. Net force is zero. If net force is zero, so as per this, sum of drag force and upthrust will be should be equals to weight. Not the drag force should be equals to upthrust plus weight. So this also goes wrong. Next option says the upthrust is constant with increasing depth. Yes, we know what's the formula of upthrust force. Upthrust force is equals to rho g v. So it is saying that density is constant. We already know g is also constant, and volume of the ball will also be what? It will be constant. So depth ऊपर नीचे होने पे आपके upthrust पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So correct answer in this regard will be C. Are you understanding, students? और लास्ट वाला भी वेट ग्रेटर नहीं हो सकता. Weight will be equals to, not greater, it will be equals to the sum of drag force. So this is also not the option. So inside, remember, when the object is moving with a constant speed, the drag force will remain, the upthrust will remain same, and drag force definitely will also remain same. Moving to the next question. Question number 11. Some small solid cubes each have a mass of 1 kg. So let's say I'm having a cube. These are the small cubes I'm having, right? These are the small cubes I'm having. And it says that each of the cube, हर cube का जो mass है, that mass is equivalent to how much value? The mass is equivalent to the mass of each cube is what? The mass of each cube is 1 kg. So I'm having a mass of 1 kg, and the length of each cube is how much? 5 centimeter. So if I write it as 5 centimeters, so this will be considered as 0.05 meters. So if this is a cube, the length over here, the length over here, and length over here, all the lengths will be same. So question says that these tiny cubes are going to join and they will be forming one larger cube. They will be forming what? They will be forming one larger cube.
और लार्जर क्यूब का वो कहता है कि वेट बता दो कितना होगा, वेयर एज लार्जर क्यूब की जो लेंथ है वो कितनी बन जाएगी, 2 मीटर। तो क्योंकि ये जो लार्जर क्यूब है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो जो डेंसिटी इसकी आएगी स्मॉलर क्यूब की और जो डेंसिटी लार्जर क्यूब की होगी वो क्या होगी, सेम। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर क्यूब। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। And what is the mass? 1. What is the volume? 0.05 into 0.05 into 0.05. So it will be 0.05 cube. When you will be solving this whole relation, so density we are going to get equals to 8,000 kg per cubic meter. So whole of the density will be equals to 8,000 kg per cubic meter. This is going to be the density of smaller box. Now let's come up to the larger box. तो larger box की भी density same रहेगी, तो density is equals to mass over volume. So we know density is same. What its density is 8,000. What will be the volume of larger box? If its side is 2, so this will also be 2, this will also be 2. So it will become 2 into 2 into 2, like 2 cube, and we are going to find out its mass. So what will be its mass? Its mass will be 8,000 into 8. So this will be equals to 64,000 kg. This is its mass. But in question, it has asked about weight. So how will this be found? W is equals to mg. So what is the mass? 64,000. What is the value of g? 9.81. So it will roughly be equivalent to 630,000 newtons. And if I need to convert it into mega newtons, this will becomes what? 0.63 mega newtons. So as per the given option, what is the correct one? It is C, 0.63 mega newtons. Is this fine? Okay, now let's come up to the next question, and this question is something related to uh, pressure and density and so on and so forth. So question says the bore hole of a depth 2000. So the total bore hole is 2000 meter. It contains oil and water. So this is having an oil and this is a water. The pressure due to the liquid at the bottom. So total pressure at the bottom is what? Total pressure at the bottom is 17.5 megapascals. And the density of the oil, what is the density of the oil? It is 830 kg. And what is the density of water? It is 1000 kg per cubic meter. Question says find out the depth x. You need to find out the depth x of the oil. So how to find out the depth x? What's the concept we are going to use? The total pressure exerted at the bottom of the bore will be due to the pressure of water plus the pressure exerted by the oil. तो हम इक्वेशन को कहां से स्टार्ट करते हैं? The total pressure at the bottom will be equals to the pressure exerted by the water plus the pressure exerted due to oil. Now we know these are the liquids, so how we can find them out? This will be 17.5 into 10 power 6, which equates pressure of water कितना होगा? This will be given by rho g h of water, और pressure of oil कितना होगा? This will be given by rho g h of oil. ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज को हम एड अप करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा ओपन स्पेस में। तो व्हाट दिस वैल्यू विल बी रिटन एज 17.5 into 10 power 6. The density of oil is how much? 830 into 9.81 into height. What is the height of oil? X. Plus what is the density of water? Density of water हमारे पास कितनी है? 1000 given है. The value of G is 9.81. And what will be the height of water we are going to take? It will be 2000 minus of
x. So you have to solve whole of this relation. So ultimately you will be ending with the value of x as